So today is a very auspicious occasion. Of course, every day is auspicious for the devotees of Lord Krishna. Every day is our Janmashtami, celebrating our Janmashtami every day at 4:30. So any day you miss the 4:30 program, you miss one Janmashtami. You miss one Janmashtami celebration. तो वैसे तो कृष्ण भक्तों के लिए हर दिन बहुत मंगलमय है और हर दिन कुछ ना कुछ उत्सव रहता है. हम लोग हर रोज़ ही जन्माष्टमी मनाते हैं. तो आज बहुत शुभ दिन है, बहुत मंगलमय दिन है. So today is double mercy or triple mercy because we have two great Thakurs. The disappearance today, Raghunandan and Vamsi Das Babaji Maharaj. तो आज कृपा की तिकड़ी है. तो आज श्री रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव है और श्री वंशीदास बाबाजी महाराज का भी तिरुभाव है. In the Vaishnava tradition, the disappearance day and the appearance day of the great exalted Vaishnava is the same. तो जो वैष्णव प्रणाली है उसमें जब वैष्णव गण का आविर्भाव होता है और तिरुभाव होता है, दोनों वास्तव में समान ही हैं. Of course, the day of the appearance, we are jubilating, we are happy. We are thanking Krishna for sending an exalted Vaishnava into the material world to come and save us. On the other hand, on the day of disappearance, we feel a little bit bad because we're missing the association of such exalted Vaishnavas. जब किन्हीं वैष्णव का आविर्भाव होता है तो बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन होता है. हम भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करते हैं हृदय से कि इतने उन्नत वैष्णव को हमारे बीच में भेजा हमारे लाभ के लिए. और जब वैष्णव का तिरुभाव होता है तो थोड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि इन उन्नत वैष्णव के संग से अब हम वंचित रह जाएंगे. But ultimately everything is for the pleasure of Krishna. Krishna sent somebody to the Vaishnava community to help to salvage the situation, and at some point in time he takes that person away. That is completely beyond our jurisdiction. तो वैसे तो कृष्ण भक्ति में सब कुछ शुभता है. तो कृष्ण अपनी इच्छा और अपनी कृपा से किसी वैष्णव को हमारे बीच भेजते हैं ताकि वो हमारा उद्धार करें. और फिर हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि जब भी कृष्ण चाहें उन वैष्णव को हमारे बीच से लेकर चले जाते हैं. What is important for us is what type of inspirations do we draw from the life of these exalted Vaishnavas. जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि जब ये उन्नत वैष्णव आते हैं तो उनके जीवन से हम किस तरह की प्रेरणाएं अपने जीवन में धारण करते हैं. So in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, I think chapter 15 or so, our Prabhupada mentions about Raghunandan. It's a brave narrative, but so deeply instructive. Sorry, Srila Prabhupada mentions about Raghunandan that? Prabhupada mentions about Raghunandan. It's a brief narrative, but so deeply inspiring. तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय में शायद प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में श्री रघुनंदन ठाकुर के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं, पर बहुत गूढ़ है. Raghunandan's father was Mukunda Das, and Mukunda Das has other two siblings. And so
when they are family of Vaishnavas, so this heritage of the worship of Lord Krishna, teaching the child how to do japa, how to worship the deities. For Raghunandan, he started as early as 5 years old. His deity service started. His father engaged him in deity service as early as 5 years old. तो हम सबको भगवान के विग्रह की सेवा करना, जप करना, इसके बारे में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। पर जो रघुनंदन ठाकुर हैं, उनका जन्म तो वैष्णव परिवार में हुआ। केवल 5 साल के थे तभी से वो विग्रह की सेवा करते थे। मुकुंद दास के घर में उनका जन्म हुआ था। It's a good inspiration for those of us who are having families. Sometimes we think we have to wait until our child or our children are तो कई बार ये जो हम लोग परिवार में रहने वाले लोग हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारा बच्चा जब But Mukunda, he didn't have to wait. 5 years old, he started engaging his son how to do deity seva. तो हम प्रतीक्षा करते हैं हमारा बच्चा जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब लगाएंगे, पर मुकुंद को वेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 5 साल का बालक था, उसको लगा दिया भगवान की सेवा में। So when one day he was gone out for some job, so he told Raghunandan that he should go and do the offering, the bhoga offering to the deities. And the name of their family deity, which has been like from so many generations, name of the deity was Gopinath. तो जो मुकुंद हैं, उनके परिवार में वंश में गोपीनाथ जी की सेवा कई वंशों से चलती आ रही थी, कई पीढ़ियों से चलती आ रही थी। और एक दिन मुकुंद हैं, वो बाहर गए किसी कार्य से और अपने छोटे से बालक, छोटे से बेटे रघुनंदन को बोला कि ठाकुर जी को भोग लगाना, गोपीनाथ जी को भोग लगाना। So as a submissive son, nice, devotee son, he went to execute the father's instructions. तो जो पुत्र है वो विनयशील था और अपने पिता की जो आज्ञा है उसको दृढ़ पालन करने लगा, वो कार्य करने लगा जो पिताजी ने बोला था। So he went and placed the offering before Gopinath. He rang the bell. He invited Gopinath to come and take the offering. And Gopinath was not forthcoming. According to his own calculation, he must eat. But Gopinath was not forthcoming. तो रघुनंदन गए, गोपीनाथ के सामने प्लेट रखी, भोग की, घंटी बजाई और गोपीनाथ को प्रार्थना की कि आओ और इसको भोग को स्वीकार करो। और उनकी अपनी गिनती के अनुसार तो गोपीनाथ को वहाँ आना चाहिए था साक्षात रूप से, गोपीनाथ तो आए नहीं सामने। So he prayed fervently, 5 years old. He prayed fervently that Gopinath, you have to eat. You know, eating? Please, 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 eat. तो 5 साल के बालक थे और गोपीनाथ आए नहीं भोग स्वीकार करने के लिए, तो उन्होंने हृदय से बहुत गंभीर प्रार्थना की और गोपीनाथ आइए आइए, कृपया करके आइए, कृपया करके आइए, कृपया करके आइए, इस भोग को स्वीकार कीजिए, इस तरह प्रार्थना करने लगे। You know, when you have a child bugs you, you're bound you're bound to do what you don't even intend to do. I mean, it's like the case of Krishna. Krishna will sometimes come to Mother Yasoda and bug her for certain things. And she would just burst out laughing and say, "Oh, Vasa, what's up, my darling? What can I do for you?" And she would do anything that he says. So in a similar case here, Raghunandan was petitioning the Lord. And traditionally, you know, Krishna is 𝑨𝒍𝒂𝒚𝒔. His limbs are interchangeable. He doesn't have to eat with his hand and mouth. He can just glance over the burger and he is eating.
bad for Raghunandan. No, you must eat. तो जब छोटा बच्चा है वो कभी पीछे पड़ जाता है माता पिता के, तो माता पिता को जो नहीं भी करना, बच्चा क्योंकि पीछे पड़ गया उसके लिए वो कार्य करना पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे तो यशोदा माता के पीछे पड़ जाते थे किसी कार्य के लिए। यशोदा माता व्यस्त हैं, परंतु कृष्ण इतना पीछे पड़ते थे कि यशोदा मैया को अपना कार्य छोड़कर कृष्ण के पास आना पड़ता था और जो कृष्ण चाहते थे वो करना पड़ता था। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर जो रघुनंदन ठाकुर हैं वो कृष्ण के पीछे पड़ गए, गोपीनाथ जी के पीछे पड़ गए, आओ 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 भोग स्वीकार करो। अब वास्तव में तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान अपनी किसी एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं। तो यानी भगवान को भोग स्वीकार करने के लिए मुंह से खाने की आवश्यकता नहीं है, वो नेत्रों से देखते हैं और भोग स्वीकार हो जाता है। पर रघुनंदन ठाकुर पीछे पड़ गए, नहीं नहीं आओ, क्योंकि उनकी गणना के हिसाब से तो सामने आएंगे और मुंह में डालेंगे, वही खाना हुआ। And this very past time, this incident happened near Katwa. Near Katwa is the village of Mukunda and his family. तो कटवा के नज़दीक है वो क्षेत्र जहाँ पर मुकुंद रहा करते थे। So Raghunandan begged the Lord. He didn't force the Lord, but he persuaded the Lord. He persuaded the Lord. When you have to persuade someone to do things that they ordinarily don't want to do, it means you convince them with feelings, logic, reasoning. So the Lord is in the heart. Ishvara sarva bhutanam redi se ajuna tistati. He knows the feelings of this boy. So the Lord decided to eat the bhoga. तो रघुनंदन ने ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ कोई बहुत जोर जबरदस्ती की कि आना ही पड़ेगा, पर उन्होंने अपने भावों के माध्यम से भगवान को एक तरह से बांध लिया इसमें कि भगवान, क्योंकि भगवान तो भावों को स्वीकार करते हैं, तो रघुनंदन के उस भाव को देखकर, प्रार्थना भाव को देखकर भगवान को वहां पर आना पड़ा। But you know what? Krishna ate, Gopinath ate everything up from the place. परंतु क्या हुआ कि अब गोपीनाथ साक्षात वहां पर आ गए और प्लेट में जितना था सबका सब खा लिया, उन्होंने प्लेट खाली कर दी। So when Mukunda returned, the father returned, inquired from the son, "Hey, my dear boy, I asked you to make some offering, book offering to the deities. Did you do it?" He says, yes, I did. तो जब पिताजी मुकुंद हैं वो घर वापस आए तो बेटे को बुलाया, रघुनंदन को बुलाया, मेरे प्रिय बेटे, मैंने तुम्हें कहा था कि भगवान को भोग लगाना, तुमने क्या भगवान को भोग लगाया, विग्रह को भोग लगाया? उसने कहा हाँ लगाया पिताजी, लगाया। So Mukunda thought, oh, good boy. Okay, give me some prasadam. तो मुकुंद ने बोला बड़ा अच्छा बेटा है, चलो कुछ प्रसाद लेके आओ अब। And Raghunandan was spellbound, you know. और रघुनंदन स्तब्ध हो गए, ये क्या पूछ लिया पिताजी ने, प्रसाद लेकर आओ। Nothing to give to his father, you know. So he told his father, Gopinath ate everything. तो रघुनंदन के पास कुछ था ही नहीं पिताजी को देने के लिए, तो उन्होंने बोला पिताजी को, पिताजी गोपीनाथ जी ने सारा कुछ खा लिया। Prasadam? What do you mean? प्रसादम का क्या मतलब होता है? गोपीनाथ ने सारी प्लेट खाली कर दी। So Mukunda thought over the matter, and he thought, this boy is not a naughty boy. तो मुकुंद ने अपनी पत्नी को बोला कि हमारा बालक है, ये कोई शैतान बालक तो नहीं है। But it's difficult for me to accept that the Lord ate up everything, hook, line and sinker. It's difficult for me to accept this thing wholly. So what to do? परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बोल रहा है कि गोपीनाथ जी ने प्लेट खाली कर दी, ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है, क्या करें? So this is how an intelligent parent treats the loyal child. He investigated, he conducted the research to find out what the boy meant, the details of the matter. What was our research? He told the boy, okay, today I'm going out again, go do the offering.
he went out through this way, and then not long he came back through this way. So he was peeping. He was watching out what was going on with his son and the deities. तो जो माता पिता हैं उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि कई बार बालक कुछ ऐसा कार्य करता है जो माता पिता अपेक्षा नहीं करते, तो यहाँ पर उसके लिए अच्छा तरीका है कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हुआ था, क्यों ऐसे हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे ही किया मुकुंद ने, उन्होंने बोला बेटे को, ठीक है, उनको समझ नहीं आया कि कैसे भोग ले लिया ठाकुर जी ने सारा। तो अगली बार बोला कि रघुनंदन मैं फिर जा रहा हूँ बाहर, तो ऐसा करो तुम फिर से गोपीनाथ जी को भोग लगाना। तो एक तरफ से गए घर छोड़कर बेटे को बोलकर, और दूसरी तरफ से आ गए और खिड़की से झांकने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। So he came by and he was peeping somewhere, watching out what was transpiring. और फिर खिड़की से झांक रहे थे कि क्या हो रहा है अंदर, उनके बेटे और गोपीनाथ जी के बीच में क्या आदान प्रदान हो रहा है। And he noticed that the boy has gone to the altar, he made the offerings, and he was persuading the Lord to come and eat. And the Lord stretched out his hand, took the laddu, and ate part of the laddu. But then Gopinath saw Mukunda. Mukunda was peeping. So he stopped there. तो मुकुंद ने बाहर से देखा कि उनके जो पुत्र हैं रघुनंदन, वो भगवान को बहुत विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि आओ आओ भोग स्वीकार करो। और उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गोपीनाथ जी ने अपना हाथ गोपीनाथ जी ने अपना हाथ बढ़ाया और लड्डू उठा लिया और लड्डू खाने लगे। आधा लड्डू खाया था तो देखा गोपीनाथ जी ने खिड़की की तरफ, तो देखा वहां पर मुकुंद खड़े वहां से झांक रहे हैं, तो वहीं रुक गए गोपीनाथ जी। So it became an internal pastime. Gopinath holding is eating half of the laddu, the other half he couldn't eat because there's an intruder. तो एक विशेष लीला हो गई कि गोपीनाथ जी ने आधा लड्डू खा लिया पर आधा लड्डू हाथ में रखा, क्योंकि वहां दिख गया कोई घुसपैठिया आ गया यहाँ पर। The Lord and his bhaktas, they need privacy to be able to have that loving exchange. The Lord and his? The Lord and his devotee, they both need privacy to be able to have the loving exchanges. तो भगवान और उनके भक्त में आपस में प्राइवेसी चाहिए जिसमें आपस में अपना आदान प्रदान कर सकें। सार्वजनिक नहीं है, वो व्यक्तिगत है। So we all want privacy in our lives now. तो हम सबको भी कुछ व्यक्तिगत चाहिए, प्राइवेसी चाहिए जीवन में। So the Lord also needs privacy. तो भगवान को भी उसी तरह प्राइवेसी चाहिए। And that is why when the pujari goes to the altar, he closes the altar before he offers the bhoga to the deities. तो इसीलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो पुजारी वहां पर जाकर पहले ऑल्टर बंद कर देते हैं। And the same tradition has been passed down since time immemorial, even prior to this Gopinath's Leela. Altars are always treated with privacy, especially during offering of bhoga. तो ऐसा नहीं है कि केवल ये जो मुकुंद और रघुनंदन ठाकुर की लीला हुई थी गोपीनाथ जी के साथ उसके बाद ही, परंतु उससे भी पहले अनंत काल से जो भगवान के जो विग्रह हैं मंदिर में, तो उनका पट बंद कर देते हैं जब भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। So the Lord is real. We're not just worshipping some statue. The Lord is real, and on this planet there are so many self-manifested deities. तो भगवान वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। और इस पृथ्वी पर कई सारे विग्रह हैं जो अपने आप प्रकट हुए हैं। The Lord is a Lord of reciprocity. Lord Krishna mentioned, 𝒍𝒍𝒂𝒚𝒔 prapadyante tamstataiva bhajamyaham. Lord Krishna reciprocates based on our love and devotion. तो हमारा जो प्रेम और भक्ति भाव होता है उसका आदान प्रदान करते हैं भगवान। So the case of Raghunandan and
Gopinath, a typical case in point. It's called, in research, it's called case study. This is a case study. तो रिसर्च में इसको बोलते हैं केस स्टडी। तो ये बहुत सुंदर केस स्टडी है जो यहाँ पर रघुनंदन ठाकुर और गोपीनाथ जी के बीच में लीला हुई। And therefore we should feel motivated to encourage our children, to inspire them to do certain things that will help them in their growth, in their devotional growth, especially things like deity service. तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक कार्यकलापों में लगाना चाहिए, विशेष रूप से विग्रह सेवा, ताकि वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। As soon as a child gets up to the age of 5 years, we should start engaging the child in some activities that will help to polish their life and not waste their time in playing all through. तो जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है तो उसको कुछ न कुछ आध्यात्मिक कार्यकलापों सेवा में लगाना चाहिए ताकि वो अपने समय का सदुपयोग कर सके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ना कि समय का दुरुपयोग करे। And even more important than that is to be able to invoke children like the type of Raghunanda who is so focused in devotion, like Prahlad, so focused in devotion. It doesn't happen by an accident. तो जिससे रघुनंदन ठाकुर हैं या प्रहलाद महाराज हैं, वो कितना एक निष्ठ थे भक्ति के प्रति, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, एकदम से दुर्घटना से नहीं हो जाता है, ये किसी घटना से नहीं हो जाता है। Husband and wife need a lot of austerities before they could invoke such powerful souls in the family. तो इसलिए गर्भ में धारण करने से पहले आत्मा को बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है ताकि ऐसी अच्छी आत्मा जो है वो पुत्र बालक के रूप में आ सके घर में। And therefore, it's a good lesson for us. This is just 500 years ago, not in Dwapar Yoga, okay? Just 500 years ago. तो ये जो लीला है केवल 500 साल पुरानी है, ऐसा नहीं है कि द्वापर युग की है, बहुत पुरानी है, केवल 500 साल पुरानी है ये। And the other Thakur, whose disappearance is today, is Vamsidas Babaji Maharaj. और आज एक दूसरे वैष्णव ठाकुर श्रीला वंशीदास बाबाजी महाराज का भी तिरोभाव है। Vamsidas Babaji Maharaj is remarkably attributed with amazing qualities, and that of being able to communicate almost all the time with his deities. तो श्रीला वंशीदास बाबाजी महाराज हैं, उनमें बहुत अद्भुत गुण थे और वो अपने विग्रह के साथ निरंतर आदान प्रदान करते थे। He appeared in 1859 in modern Bangladesh. Like most of our acharyas, they have appeared in Bangladesh. तो सन 1859 में बांग्लादेश में उनका प्राकट्य हुआ। हमारे कई सारे वैष्णव आचार्य हैं, उनका प्राकट्य बांग्लादेश में हुआ। Vamsidas Babaji, he was married, but he didn't waste time with the marriage. At an early stage, he left and became a Babaji. वंशीदास बाबाजी महाराज विवाहित थे, परंतु विवाह के कुछ ही समय के बाद समय व्यर्थ ना करते हुए उन्होंने घर छोड़ दिया और जाकर बाबा जी बन गए। In his kutia, he doesn't lock his door. Even devotees ask him to always lock his door, but he wouldn't care less. तो कभी भी अपनी कुटिया का दरवाजा बंद नहीं करते थे। कई बार भक्त कहते थे कि बाबा जी महाराज कुटिया बंद कर दो कम से कम, तो मना कर देते थे, मैं नहीं बंद करूँगा, खुला छोड़ते थे हमेशा। He had one of the set of deities he had was Gauranitai, and he cooks in different pots for the deities. For Gora, they cook a different pot. Nitai, he cooked a different pot. So I remember one time
he was a contemporary of Bhaktisiddhanta. At that time, Bhaktisiddhanta had many brahmacharis in his mat, and the brahmacharis also used to visit 𝒉𝒎𝒏𝒕 Babaji Maharaj. तो वंशीदास बाबा जी महाराज की कुटिया में उनके निजी विग्रह थे शिशिक गौर निताय, और जब उनके लिए भोग तैयार करते थे तो अलग अलग दोनों के पॉट, अलग अलग उनके लिए कटोरी थी, तो वो गौरांग महाप्रभु के लिए अलग से कुक करते थे उनकी ही कटोरी में, और जो नित्यानंद प्रभु की कटोरी है उसमें सिर्फ उनके लिए ही कुक करते थे। और वंशीदास बाबा जी महाराज जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समकालीन भक्त हैं, वैष्णव हैं, और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी भक्त थे, वो भी कई बार जाया करते थे वंशीदास बाबा जी महाराज के पास। Although he appeared in Bangladesh, but he relocated to Navadvip. Navadvip has always been the citadel of spiritual learning and the hub of renunciation and detachment. तो आध्यात्मिक जीवन और वैराग्य का केंद्र बिंदु जो है वास्तव में नवद्वीप धाम है। तो हालांकि वंशीदास बाबा जी महाराज का प्राकट्य बांग्लादेश में हुआ था, परंतु कुछ समय बाद वहीं पर नवद्वीप में आ गए, वहीं पर निवास स्थान बनाया। So at one time some dacoits has stolen one of the pots of his deity. I don't remember whether it is Nityananda's own pot or the pot he used to cook for Nityananda or Gora. So he thought, hey, your pot has been stolen. You naughty. You allow someone to come and steal your pot? Okay, no cooking for you. तो एक बार चोर घर में उनकी कुटिया में घुसा है, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद करते नहीं थे, तो चोर घुसा है और या तो नित्यानंद प्रभु का या गौरांग महाप्रभु का जो कटोरी थी जिसमें कुकिंग होती थी वो चुरा के ले गए। जब वंशीदास बाबा जी महाराज वापस कुटिया में आए, देखा कि वो तो गायब है, तो बोला, उन्होंने विग्रह को बोला, गौरांग महाप्रभु को उदाहरण के लिए बोला, अरे तुम तो बड़े शैतान हो, तुम्हारी कटोरी चोरी हो गई, तुम ध्यान नहीं रखते, तो अब आज तुम्हारे लिए कोई कुकिंग नहीं होगी, भूखे रहो। So he didn't cook for the deity. तो फिर उन्होंने उन विग्रह के लिए जिनकी कटोरी चोरी हुई थी, वंशीदास बाबा जी महाराज ने कुकिंग नहीं की उस दिन। He blamed it on the deity that you're a rascal, you stole your pot. धूर्त व्यक्ति, मूर्ख, तुम ध्यान नहीं रखते, तुम्हारी कटोरी चोरी हो गई। उन्होंने भगवान को बोला, विग्रह को बोला। So Bhakti, some people regarded him to be crazy, you know. कई लोग सोचते थे कि वो थोड़ा पागल हैं। I remember at some point in time, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he stopped his brahmacharis from visiting Vamsidas Babaji Maharaj because his activities were becoming so incomprehensible to the ordinary jiva. तो इस घटना के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को मना किया कि आप वंशीदास बाबा जी महाराज के पास नहीं जाओ। क्यों मना किया? इसलिए क्योंकि जो वंशीदास बाबा जी महाराज का स्तर है वो बहुत ऊंचा स्तर था, और जो साधारण ब्रह्मचारी थे वो इस बात को, नए भक्त थे, इस बात को समझ नहीं पाते। Can you imagine something you are using for the service of the deities got missing and you blame it on the deity? क्या आप इसके बारे में सोच सकते हो कि आप श्री विग्रह की सेवा के लिए कुछ आपके साज सामान है, मान लो गायब हो गया, और आप उसकी जिम्मेवारी विग्रह के ऊपर लगा दो कि आपके कारण हुआ है? ऐसा सोच सकते हो कभी आप? So he told the deity, until when you bring back this pot, no cooking. तो उन्होंने विग्रह को बोल दिया कि जब तक अपनी कटोरी वापस लेकर नहीं आओगे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनेगा खाने को। So one day, one gentleman just brought back the pot. तो एक दिन एक व्यक्ति आए और वो जो चोरी की हुई कटोरी थी वापस कुटिया में रख के चले गए। Then he commenced his service to the deity. और उसके बाद कटोरी वापस आने के बाद ही वंशीदास बाबा जी महाराज ने अपने विग्रह के लिए फिर से भोग बनाना शुरू किया। So Vamsidas Babaji Maharaj's ways were very, very strange. तो श्रील वंशीदास बाबा जी महाराज का जो कार्यकलाप थे बहुत अकल्पनीय थे हमारे लिए।
One time, something happened, and he drowned his deities in Ganga. He drowned his deities. एक बार ऐसी कोई और घटना हुई तो उन्होंने अपने विग्रह को उठा के गंगा जी में फेंक दिया. He tied his deities and put them in Ganga, and then used the rope and tie it on his feet and march it there. Can you imagine? तो उन्होंने अपने विग्रह को बांधा और बांध के गंगा जी में फेंक दिया और अपने पैर के अंगूठे के साथ एक धागा था उससे विग्रह को जोड़ा, मतलब वो रस्सी बनाई और विग्रह गंगा जी में थे, अपने पैर के अंगूठे से उनको बस रखा हुआ था वहाँ पे. So Bhaktisiddhanta's brahmacharis, his disciples, some of them didn't quite understand why Maharaj stopped them from visiting the sadhu. So he explained to them that, look, you are not on the level of understanding Vamsiddhas Maharaj's activities. So in order that you don't cause offenses and kill your spiritual life, I stop you from visiting him. तो कुछ जो शिष्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, वो आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे कि हमारे गुरु महाराज ने क्यों मना किया है इतने उन्नत वैष्णव के पास दर्शन के लिए जाने के लिए. तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको समझाया, देखो जो वंशीदास बाबा जी महाराज हैं उनका स्तर बहुत ऊपर है और तुम यदि वहाँ पर जाओगे उनके कार्यकलापों को समझ नहीं पाओगे तो तुम एक महान वैष्णव के चरणों में अपराध कर बैठोगे, उससे अपना आध्यात्मिक जीवन समाप्त कर दोगे, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए. So it's a common thing when people see a sadhu, a very exalted person, they approach him, give me mercy, give me mercy, give me kripa, give me kripa. So there was this person who was always coming around to beg Babaji Maharaj for kripa, for mercy. So one day he removed his coupons and gave it to him. Take the kripa. तो भारत में विशेषता ये बहुत साधारण है कि जब भी कोई साधु आते हैं तो हम जाते हैं, साधु महाराज कृपा दीजिए, वैष्णव कृपा दीजिए, हम भक्तों से कृपा मांगते हैं. तो इसी तरह एक व्यक्ति था, वो वंशीदास बाबा जी महाराज के पीछे पड़ा था, हर रोज आता था, बाबा जी महाराज कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए. तो एक बार जो आया तो वंशीदास बाबा जी महाराज ने अपना कॉपी उतारा, उसको दे दिया और बोला ये लो कृपा. Another person had also been bugging him. He comes to visit Maharaj almost every day. And then one day Maharaj, he looked right into his face and said, if you love yourself and you love me, stop coming here. ऐसे ही एक और व्यक्ति है, वो हर रोज आता था, बाबा जी महाराज कृपा दीजिए, उनके पास पीछे पड़ गया था. तो एक दिन वंशीदास बाबा जी महाराज ने उसको बोला, देखो यदि तुम अपने आप से प्रेम करते हो और मुझसे प्रेम करते हो तो आज से यहाँ आना बंद कर दो. So Babaji Maharaj was strange. On one occasion, he threw a stone at somebody. तो बहुत heavy stone. He threw at somebody. तो बहुत विचित्र थे वंशीदास बाबा जी महाराज. एक बार उन्होंने भारी पत्थर उठाया और किसी के ऊपर फेंक दिया. So whatever the person might have done is known to him. I mean, it's like some of these acharyas. I know the case of Gorakishore Das Babaji Maharaj. When so-called sadhus come to have some big sangha and people come around all over the place, and it's near to his kutia, and immediately they finish the sangha, he tell his servants to go and purify the place with cow dung. So the servant will be surprised. The place was just purified by sangha. He said, that's not sangha. This man is chanting money, 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 rupee, rupee, rupee. तो इसी तरह जैसे वंशीदास बाबा जी महाराज हैं, उसी तरह जो कई बार उन्नत वैष्णव हैं बहुत विचित्र कार्यकलाप करते हैं. जैसे श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज थे, तो उनके साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे और एक तरह से संग कर रहे थे. तो जब वो सत्संग समाप्त हुआ तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों को बोला कि जाओ और इस स्थान को साफ करो, गोबर के साथ बिल्कुल साफ कर दो. तो बड़े हैरान हो गए, ये गोबर से क्यों साफ करना है, अभी तो सत्संग हुआ है, इससे अच्छा शुद्ध क्या हो सकता है.
तो बोला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने सत्संग नहीं हुआ, ये व्यक्ति पैसा 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 केवल पैसा चाहता था, उसके लिए यहाँ पर आकर बैठा सत्संग कर रहा था। So when Vamsidas Babaji Maharaj threw someone with his, threw his stone at somebody, the highly elevated souls, they play a blind spot to it because they don't know what he is seeing in that person. For the ordinary person, it looks like, for us, it looks like, we say, Sadhu, why is he being offensive to people? हम जैसे साधारण लोग हैं बड़े चकित हो जाएंगे जब वंशीदास बाबा जी महाराज ने पत्थर मार दिया किसी के ऊपर, हम चकित हो जाएंगे, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं दूसरों के साथ। परंतु जो उन्नत वैष्णव है वो वास्तव में देख पाएंगे, पता नहीं वंशीदास बाबा जी महाराज जिसके ऊपर पत्थर फेंका उसमें क्या देख रहे थे, हम तो नहीं जान सकते। So it is very difficult to understand what the Babajis, why they do what they do, how they do what they do, and therefore keep a distance. तो इसलिए जो बाबा जी महाराज होते हैं वो क्या करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में बहुत कठिन है समझना, इसलिए सबसे अच्छा है कि इनसे दूर रहें। In most cases they are not Ghostanandis, and so they are not like, regular preachers whereby they come to the Madhyamadikari level to set an example for the general mass of people. They're just like avadutas. तो जो अधिकांश जो बाबा जी हैं तो वो उन्नत वैष्णव होते हैं, अवधूत की तरह होते हैं, ऐसा नहीं है, वो गोष्ठानंदी नहीं होते, भजनानंदी होते हैं, तो इसलिए वो अपने भजन में ही बस आनंद लेते हैं, और अवधूत की तरह है तो उनके कार्यकलाप समझना बहुत कठिन होता है। So we cannot understand why Vamsidas Babaji does some of the things he did, how he did some of the things he did. तो हमारे लिए समझना संभव नहीं है कि वंशीदास बाबा जी महाराज ने जो कार्यकलाप किए बड़े विचित्र से, वो क्यों किए, किस कारण से किए, कैसे किए, हमारे लिए समझना संभव नहीं है। So he was in Navadvip for a long time and then he journeyed to Vrindavan. तो काफ़ी समय नवद्वीप में रहे बाबा जी महाराज और फिर वृंदावन आए। People from Delhi, Vrindavan is just at your backyard. How many people here have been to Vrindavan? तो दिल्ली के तो बहुत नज़दीक है वृंदावन, आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं? I've been to Vrindavan. I have not been to Vrindavan. Raise up your hand. जो वृंदावन नहीं गए वो हाथ खड़ा करें। Never been there. How old are you? क्या उम्र है आपकी? 18। Oh, you're a young boy. नवयुवक। Maybe you should try to visit. No, you too. Huh? Okay. Yeah. It's a little bit better because I know some devotees from in our movement from Delhi area, how to force them to go to Vrindavan. I said, see, we came all the way from America. Vrindavan is just at your backyard. Yamuna is there. And Yamuna is more glorious than even the Ganga. So you have the assets, you have the spiritual resources right at your backyard. Take advantage. तो मुझे कई बार तो यहाँ तो फिर भी ठीक है, मुझे कई बार कुछ स्थानों पे दिल्ली में बोलना पड़ा भक्तों में ही कि वो वृंदावन ही नहीं गए। मैंने उनको जबरदस्ती बोला कि जाओ वृंदावन, देखो हम तो अमेरिका से आए हैं वृंदावन जाने के लिए और आप लोगों तो पिछवाड़े में है वृंदावन और आपके पास साधन भी है, यमुना जी वहाँ पर हैं, आध्यात्मिक सब कुछ वहाँ पर है, तो आप जाओ वृंदावन। Each time you go to Vrindavan, you are taking a step towards Krishna Loka. तो जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण लोक के लिए आपका टिकट कट जाता है। Even Vamsidas Babaji Maharaj, he was practicing his devotional life in Navadvip, but he went to Vrindavan. तो वंशीदास बाबा जी महाराज भी नवद्वीप में रहते हुए अपनी भक्ति को कर रहे थे और फिर बाद में वृंदावन गए। Why do we have to waste our time to go to Vrindavan?
because Vrindavan is the land of Krishna. Vrindavan is not different from Krishna Loka. तो हमें क्यों वृंदावन जाना चाहिए? क्योंकि वृंदावन गोलोक से अभिन्न है, वृंदावन कृष्ण का क्षेत्र है। So you are here, it doesn't cost you so much to go to Vrindavan. We have to pay so much money for ticket. And for poor brahmacharis like, like some of us, it's very difficult to come to Vrindavan from America. तो हम लोग तो अमेरिका है, वहाँ से वृंदावन आना है तो बहुत पैसा खर्च होता है। यहाँ तो बहुत नज़दीक है, बहुत कम खर्चा होता है। But Vrindavan is just a stone throw to you. So my humble request is, take advantage of your great fortune to be born here, not even the land of Bharata, to be born and staying in the Delhi area. Vrindavan is just your backyard. तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सबका जन्म यहाँ पर हुआ है, ना केवल भारतवर्ष में परंतु दिल्ली के शहर में, जो आप तो बिल्कुल पिछवाड़े में है वृंदावन। तो हमारा ये विनम्र निवेदन है कि आप जाइए वृंदावन। When we visit Vrindavan, whether we like it or not, I mean, it's like if you put your hand into fire, whether you like it or not, the fire will burn you. जब आप अपना हाथ अग्नि में डालेंगे तो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, अग्नि आपके हाथ को जला देगी। उसी तरह वृंदावन है। Similarly, when we visit Vrindavan, we get purified, and this is not just a preaching strategy to get people to come to Vrindavan. In the management sciences and in psychological science, there is a theory. One German psychologist, he developed, Professor Lewin, he developed the field theory, and he demonstrated how the environment impacts on our behavior. तो मैनेजमेंट साइंसेस में एक थ्योरी है जिसमें एक जर्मन विशेषज्ञ हैं, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया इसके ऊपर और निष्कर्ष निकाला कि जो क्षेत्र थ्योरी निकाली, फील्ड थ्योरी निकाली, जिसके माध्यम से बताया कि जिस वातावरण में रहते हैं वो कितना प्रभाव पड़ता है उसका हमारी चेतना के ऊपर। ये उन्होंने स्थापित किया अपनी थ्योरी के माध्यम से। So we're saying visit Vrindavan is not another strategy for preaching, another motivational strategy that you should visit Lord Krishna's birthplace. But it is a science. That is where Krishna is being worshipped 24/7. That's where Krishna had all of his major leelas, and the place is highly purified. So whether you like it or not, just by stepping onto Vrindavan, the environment impacts on our values. तो ये कोई प्रीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है आपको बोलना कि आप वृंदावन जाइए। वास्तव में ये तो विज्ञान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो यहीं पर रहे हैं, उन्होंने अधिकांश लीलाएं यहीं पे की हैं। तो जब भी हम वृंदावन जाएंगे तो चाहे हमें अच्छा, चाहे हम चाहें या ना चाहें, जिस तरह अग्नि में हाथ डालने से अग्नि हाथ जला देती है, उस तरह वृंदावन में जाने से चाहे चाहें या ना चाहें हमारा शुद्धिकरण होता है। So we have to try. If we can just try to get friends, family members who may not be interested even in Krishna consciousness. People who like to travel, get them to visit with you to the holy theater like Vrindavan, and they benefit a lot. Instead of arguing back and forth why they are not participating in Krishna consciousness, you can just lure them into visiting Vrindavan and they become purified. A lot of the preaching, a lot of the talking is already taken care of. तो कई बार भक्तों को चिंता होती है, हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे इतना बातचीत करते हैं, उनको इतना समझाते हैं, पर भक्ति में जुड़ते नहीं। तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, उनको बस वृंदावन लेकर जाइए। उनको घूमने का शौक है, घूमना अच्छा लगता है, उनको घुमाने के लिए वृंदावन ले जाइए। बस वहाँ पर जाएंगे और जाने मात्र से उनको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा।
Any comments or questions? कोई प्रश्न है आपके, कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष अवसर है, महाराज श्री यहाँ पर आए हैं तो महाराज का बहुत अद्भुत अनुभव है, तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। Somebody at the back there. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for the Maharaj, I would like to know what is the best way that we can use when we visit to Vrindavan. What all should we do to make the best use of the visit? Yeah, going to Vrindavan, thank you. Going to Vrindavan, yeah, it's a physical entry into Vrindavan, and there is also the mental and psychological aspects. So, each time I want to encourage someone to come to Vrindavan, say from America or from other parts of the world, first I buy them Vrindavan Parikram, for them to have some insight about the different holy places in Vrindavan and the implications of going to Vrindavan, the mindset you should have when entering Vrindavan. Why we need to do that? Because Vrindavan, materially speaking, is not a clean place. You may go to Vrindavan and could just deadly be offensive. So you first invite them to go to for parikrama. That's what you're saying, Maharaj. So when you have friends from America, yeah, first I buy them this, Vrindavan Parikrama book for them to read, because in most cases they are scholars. So they read and they get inspired to come. But before they come, they already understand the mindset they should have. What are the places that they have to visit? And in that way, it does not become like a tourist trip. You prepare the people's mind ahead of time. तो प्रश्न ये था प्रभु जी का कि महाराज जी, जब हम वृंदावन किसी को लेके जाएं या हम वृंदावन जाएं तो हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, क्या करना चाहिए वहाँ जाकर। तो महाराज ने बताया कि जब भी आप किसी को वृंदावन लेकर जा रहे हैं तो देखिए, वृंदावन में जाना दो तरीके से हो सकता है। एक तो स्थूल शरीर के माध्यम से, और दूसरा है सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से भी वृंदावन में प्रविष्ट होना। तो महाराज जी ने बताया कि जब मैं किसी को भी निमंत्रण देता हूँ वृंदावन आने के लिए, उदाहरण के लिए अमेरिका से, तो सबसे पहले वृंदावन परिक्रमा जो पुस्तक है वो उसके लिए उपलब्ध कराता हूँ और उनको एनकरेज करता हूँ कि आप इसको पढ़िए, क्योंकि जब उसको पढ़ते हैं तो उनकी चेतना तैयार होती है, वो समझ पाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि अगर चेतना तैयार नहीं है, वृंदावन में चले गए तो बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, हमारी इन भौतिक आंखों से देखा जाए तो वृंदावन कोई साफ स्थान नहीं है, गंदगी नजर आएगी, टूरिस्ट प्लेस की तरह हम पहुंच जाएंगे। तो इसलिए पहले वो पुस्तक पढ़ेंगे, देखेंगे कहाँ पर जा रहे हैं, लीला स्थलियों के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर कुछ महिमा उनके हृदय में प्रकट होगी। Going to Vrindavan, it's a very nice point you raised. Going to Vrindavan, the mindset should be that of a newly married couple. They've just got married and they are going for honeymoon. तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। तो जब वृंदावन जाते हैं तो चेतना ऐसी होनी चाहिए जैसे एक युवक और युवती हैं, उनकी अभी अभी शादी हुई है और विवाह के बाद वो जैसे हनीमून में जा रहे हैं, तो वैसी चेतना होनी चाहिए वृंदावन जाते हुए। When people go for honeymoon, what happens? They shut down communication with the outside world. It's only between the bride and the bridegroom. तो जब हनीमून पे जाते हैं युवक युवती, तो क्या करते हैं, पूरे संसार के साथ अपना कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, बस वो दोनों आपस में होते हैं। So going to Vrindavan, we should have the mindset of honeymoon with Lord Krishna. तो जब वृंदावन जाएं तो हमारा मानसिक धरातल ये चेतना होनी चाहिए कि हम कृष्ण के साथ हनीमून पर जा रहे हैं। And that terminology just sums up everything. और ये यही सार है। Don't go to Vrindavan to engage in business. वृंदावन बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए मत जाइए। Take a break from your business. You're going to Vrindavan, you are reenacting
a lila with Krishna, you are now exhibiting the status of a Prakriti, and Krishna is the Purusa. And so it's between the two of you. And when we have this type of mindset, we can focus deeply in our sadhana in Vrindavan. तो जब वृंदावन जाएं तो अपने कार्यकलाप यहीं छोड़कर जाएं, अपना दफ्तर अपना व्यापार यहीं छोड़कर जाएं, उनसे छुट्टी लें, वहाँ पर जाएं, क्योंकि हम प्रकृति हैं और कृष्ण पुरुष हैं। तो वहाँ पर जाएं और इस तरह जब केवल कृष्ण के लिए जाएंगे और कृष्ण के लिए वहाँ पर रहेंगे तो फिर अद्भुत आदान प्रदान होगा और एक तरह से लीला वहाँ पर होगी भक्त की और भगवान की। So it is important, our mindset, our mentality when we're going to Vrindavan. It's important. People go to Vrindavan, but they go, in some cases, I mean, I'm not blaspheming, I mean just being practical. Some people go to Vrindavan, but they go to survey the area where they can set up a skyscraper to make money. So to sell all the flats and all those things. तो हम आलोचना नहीं कर रहे, परंतु कई बार लोग जो है वृंदावन जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहाँ बहुत ऊंची इमारत बनाएंगे, वहाँ पे फ्लैट बेचेंगे, फ्लैट बनाएंगे, इस मानसिकता के साथ वृंदावन जाते हैं। But the devotee of Lord Krishna, Krishna Bhakta, should go to Vrindavan with the mindset of loving relationship with Krishna. तो जो भक्त जाता है वृंदावन तो वो ऐसी धारणा लेकर जाता है कि कृष्ण के साथ मेरा प्रेम संबंध है, उस प्रेम के लिए वहाँ पर जाता है। And we will relish the time that we spend in Vrindavan if we have this mindset. और यदि हम ये मानसिक चेतना लेकर वृंदावन जाएंगे तो फिर वास्तव में वहाँ पर हम वृंदावन में पूरा आध्यात्मिक आनंद ले पाएंगे। The only problem with it is that you may not like to live Vrindavan again. एक समस्या ये हो सकती है कि आपका वृंदावन छोड़ने का मन ही ना करे। But we have social responsibility, we have family responsibility. So you have to be courageous to come back and take care of your responsibilities. परंतु आपकी सोशल और पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेंगी, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहेंगी, तो इसलिए आपको वहां से यहाँ पर आकर अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है। Does it make some sense? All right. What's the time now? 9:15, Maharaj. Huh? 9:15. Oh, we are beyond the time already. Is that right? Maharaj, calves, holy cow. This is the problem in India, you know. In India, when you give a class and you ask about the time, they say, hey, Maharaj, continue. This is not America. All right. Hare Krishna Maharaj, thank you for your such nectarian class. Maharaj, in your lecture you told about Babaji, that Vanshdas Babaji you mentioned. He was such a liberated soul. Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj cautioned his disciples not to go to him, otherwise they misjudge him or commit offenses. So Maharaj, in the same, in other way, in the same context, Prabhupada in many places had criticized the Babajis of Vrindavan. So both things are there. So even now, within our movement, many devotees are influenced or inspired, might be, by some Babajis. So how to educate them and how to, for ourselves, how to see them in mature way? Yeah. Nice point you raised. We have a problem with choices. Sometimes I've seen some devotees in ISKCON. I won't mention names, but I've seen some devotees in ISKCON, they go to Vrindavan and they purportedly perform austerities, chanting 108 rounds. I know of a case of a couple, young couple. My husband and wife were chanting 108 rounds. But then later, they left ISKCON. And then later, they become gurus. They abandon their guru
So Vrindavan is a delicate, it's a difficult place. Without guidance, it's very challenging. People who want to go and live in Vrindavan, they should consult with their gurus. It's not something you independently make a decision. Because we have seen some of the cases where people went from frying pan to fire. So yes, you're right. Prabhupada criticized some Babajis. But Vamsi Das Babaji is in our Gaudiya Vaishnava tradition. Just like Gorakristo Das Babaji Maharaj. Yeah, so some of the Babajis, their lives are very exceptional. But at the same time, we should not be ensnared to. I mean, the problem is sometimes people are in ISKCON and they feel that there's something they are missing, or someone tells them that, oh, Prabhupada did not give you everything. I give you the remaining things. Come to me. Okay. If even Prabhupada told us only to chant 16 rounds and follow 4 regulative principles, how many people are following that? 4 regulative principles and to chant 16 rounds. If you chant 16 rounds purely, you're going to become a pure devotee. But we are chanting offensively. It's not that Prabhupada did not give us everything. He gave us the essence. What should accelerate our devotional growth? What could enable us to attain Krishna Prema Pumato Maha? That is the essence. But we get enamored by cheap CDs. Yeah, I know also some young devotees from ISKCON who got attracted to some Babajis and Vrindavan. So, but then, spiritual life is not easy. Let's be frank with ourselves. Spiritual life, devotional life is not a gulab jamun. It takes a lot of determination, a lot of austerities. It's not so juicy in the beginning. It's very juicy when we attain the ruchi and we progress in that line. But in the beginning, we have to force ourselves to wake up at 3 o'clock. We have to force ourselves to go to bed early enough. So, yeah, we need some guidance. We need some guidance. Because one of the major problems that we are facing as an institution in ISKCON is, in some cases, people just take initiation and they feel that they've attained perfection. Now they become independent. They want to go there, they want to go here. Or they're given some position, maybe Pujari, and without consulting with the management, they've gone to Saudi Arabia with some people who went. I mean, these things are going on. These things are going on. So yes, we need to be guided. The point you raise is very valid. Yeah. तो प्रश्न से सार ये है कि वृंदावन जब भी जाएं तो हमें गाइडेंस में जाना चाहिए, मार्गदर्शन में जाना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो हम भ्रमित होंगे। तो वहाँ पर वंशीदास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे बहुत ऊंचे धरातल के भक्त भी हैं, और साथ के साथ प्रभुपाद जी ने कई बार खंडन भी किया, तो कई दूसरे भी हैं। तो इसलिए वहाँ जब भी जाएं तो हमें मार्गदर्शन में रहना चाहिए। Yes,
You want to ask a question? Yes, Maharaj. Really? Okay. Maharaj, my question is in continuation of his question, but in some other way, in another way. As you very rightly, Maharaj, said that sometimes we feel that there's something missing there. For example, Srila Bhaktisiddhanta Thakur stopped his disciples to go to Vanshidas Babaji Maharaj because he is very exalted. But a devotee may feel, oh, he is exalted, but my guru is not exalted. So the grass is greener on the other side. So how to get that conviction that even if Srila Bhaktisiddhanta Thakur is here and not acting like Vanshidas Babaji Maharaj, he is at the same level. So how should we develop that conviction that being in ISKCON also we can attain perfection? We have a problem with inferiority complex, spiritual inferiority complex. And I remember one time in America, we were in Vrindavan. After Janmashtami, next day is Prabhupada's appearance. So we are the Palace of Gold, Prabhupada's Palace of Gold. So they were all Prabhupada disciples, sannyasis. And so I was the only person who was like a second generation guy. And so during the offering, one of Prabhupada's sannyasi disciple, he told me, oh, Vasudeva Maharaj, go and do your offering. I said, oh, come on. What do you mean? You go do your offering first. You're Prabhupada disciple, no? You do your offering. I'm a second generation guy. So I like to argue. Of course, even with my Guru Maharaj, Bhakti Swami Maharaj, when he was around, he asked me to do some certain things. I will argue. I remember on one occasion, when he told me to go and preach to professors, a guy who at that time I don't even have a master's degree, and he gave me an instruction: go and preach to the professors. I told him, I do this. I go on Hare now with devotees. I go for book distribution with devotees. We go to different offices to distribute books. And he wrote back to me to say, oh, Vasudeva, your report is very good, but all the things you mentioned in your report, any ISKCON devotee can do it. He said, go and preach to the professors. So when he visited, he spoke to me in privacy. He said, I know what I asked you to do is very difficult, but you have to do it anyway. If you don't do it, you will not be happy. Your guru knows this thing is very difficult. He has to do it. And then he gives you like a curse. If you don't do it, you will not be happy. So, back to New Vrindavan. So when Vedavyas Maharaj, proper disciple, he told me, go and do your offering first. I said, you people are senior people. You do your offering first. You're like my uncle, spiritual uncles. So why have to lead the way? You go do it first. And then he brought a big argument. He said, Vasudeva, see, I know you're a big scholar. Okay, you show me in any of Prabhupada's books where Prabhupada mentioned that disciples, sannyasi disciples of Prabhupada, have a different compartment in the spiritual world. He said, if you cannot show me, you better go and do the offering. So that's how, he completely, he won the argument. So I went to do the offering. So, yeah, we have a reason to feel inferior. It's part of material conditioning. If we see somebody who is a disciple of Bhaktisiddhanta, immediately we feel that type of complex. But see, before Krishna, everyone is the same.
what is important is bhaktiya, loving devotion to Krishna. Even Prabhupada, he told some of his disciples not to visit some of his god brothers. Why? Because the apprehension was that if they approach them, some will give counter instructions. There will be confusion. So, I see this is the point. When we have guidance, it makes a lot of difference. And so, I for one, I don't need. See, I've seen people who left the movement when Prabhupada left the planet, and people we are rushing to. I don't want to mention names. Some of the living Swamis at that time, some of Prabhupada God brothers. And you know, I had this conception. As a young brahmachari, I had this conception. I thought, anyway, these people also will leave the planet. So we'll see where they will run now, the next shelter where they will run to. Yeah, I mean, I just had that conception, and I was comforted with it. Okay, Prabhupada left, and then you're running away to go and take shelter of somebody else outside of ISKCON. That person, Prabhupada's god brother, he will also leave. So we'll see whom we're going to run to. So sometimes we don't have that deep faith in the instructions of our acharyas, of the spiritual master. Or we are thinking there is something that we were not given. But we've been given everything that we'll need to accelerate our journey back home, back to God. We have the favorable winds. We have the ship, the captain, and the favorable winds. See, association is an amazing thing. There are some people who can become victims of circumstance without strong association. There are some people who are just stubborn. You can't move them. So, I'll give you an example. See, when I was a kid, I knew I was going to leave my parents' home at some point in time. So, right from my early teenage life, I knew I was going to leave the home. So, my conception was, okay, what do I have? What can I show that belongs to me? Let me read like hell. So, I used to read like hell. In fact, my uncle will go and chase me away from my reading room. Because of that fear, hey, if I don't have something to show for myself in the future, my life is a failure. So, I had an uncle, my mother's youngest brother. He was living with us. He was not being attentive to learning, to reading, to school. So we are all little kids, but I called him down and told him that, see, you are missing something in your life. Myself and you, we will leave this house. So if you don't prepare for your future, you will miss your whole life. So in a similar way, we're thinking that we are babies. We can just play around and then jump onto one person when Prabhupada leaves. And then what about when that person leaves? And I've seen people like that in ISKCON. They jump away from ISKCON to take shelter of some guru outside of ISKCON. And then that guru leaves the planet, and then they jump onto another society. No, I've seen that. So this is like a spiritual flirtation. We should be focused. What Krishna has given to us is in His fullness. What Prabhupada has given to us is in His fullness.
And therefore, we should be courageous and have the self-motivation to practice devotional life within the periphery of ISKCON. So, little bit Hindi. Thank you so much, Maharaj. You're welcome. Very wonderful and elaborate, heart-touching explanation. Thank you, Maharaj. Any questions from the Mataji's? We would want to give everybody a chance, you know. We don't want women to feel marginalized. तो माता जी बहुत सुंदर अवसर है, महाराज जी यहाँ पर आए हैं और प्रेरित भी कर रहे हैं, तो जो भी आपको आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्नति के लिए प्रश्न आप पूछ सकते हैं अभी. Otherwise, people come and they feel, oh, this society is society for men. I didn't see any woman asking any questions. The women, they brush them to the background, to the back. I'm just joking. All right, Srila Prabhupada. Oh, someone is asking a question? Hare Krishna, Okay. Hare Krishna Maharaj, it was very nectar and that the answer that you gave was very enlightening. A small question regarding the same question, continuing the same question. What would be the status of the people who are jumping from one guru to another guru? Finally, where would they land up? Will they reach the destination which they are longing for, or they'll be again in the back into the material world struggling once again? Because we've seen in the life many people leaving the moment and moving here and there, of course. And what would be the status? What would happen to them? Will they reach the destination, though they appear to be chanting 64 rounds and doing big austerities in Vrindavan, but what will be the final status to their destination? Can you explain what she means? Can you explain what she means? Yeah. वो 64 माला भी करते हैं पर अपने आध्यात्मिक गुरु को छोड़ के गए, किसी और की शरण ली और 64 माला भी कर रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी? क्या उनको परम गति प्राप्त होगी या वो भौतिक संसार में होंगे? क्या उनको मिलेगा? Can you summarize in English? Okay, sorry. The question is my that the devotees who leave their guru and go take shelter of somebody else and apparently chant even 64 rounds. So what will be the final destination? They have left their spiritual master, taken shelter of somebody outside ISKCON. So what will be the destination? That is up to Krishna and Srila Prabhupada. You see, it is very difficult to attain perfection by our independence endeavor. तो हमारी स्वतंत्र प्रयास से पूर्णता प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो उनको क्या होगा वो कृष्ण और श्रील प्रभुपाद के ऊपर निर्भर करेगा. For some people, it's like, you know, they are struggling to become self-realized, and for some people, they are struggling not to become self-realized. तो कुछ लोग या भक्त परिश्रम कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार होने के लिए और कुछ परिश्रम कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार ना प्राप्त हो. To abandon your guru is an offense. It's guru aparad. अपने आध्यात्मिक गुरु की शरण छोड़ना एक अपराध है, गुरु अपराध है. And it's so dangerous. It's so dangerous in our spiritual culture. और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ा खतरा है ये. We should not jump into initiation. तो हमें दीक्षा के लिए भाग के कोई रेस नहीं लगी कि जल्दी जल्दी दीक्षा लेनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए. I remember the case of Bhakti Swami Maharaj when he was leaving the planet. He announced to all of his disciples, he said, none of his disciples should leave ISKCON. तो महाराज बता रहे हैं कि जो उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जब वो धराधाम छोड़ के गए तो जाने से पहले महाराज ने अपने सब शिष्यों को ये आदेश दिया कि कोई भी मेरे तिरुभाव के बाद ISKCON छोड़ के नहीं जाएगा. And I know also the case of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. He also publicly, right on his website, that his disciples should remain in ISKCON. और इसी तरह श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज जी हैं,
वो तो जब यहाँ पर व्यक्त लीला भी थी तो उन्होंने वेबसाइट पे पहले से ही घोषणा की थी कि कोई मेरा शिष्य इस्कॉन छोड़कर नहीं जाए. The Shastras also advocate that leaving your guru is an offense. तो इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक गुरु की शरण छोड़ना एक अपराध है. Now it's up to us to judge if someone is so grossly offensive, what becomes of his future? तो हम खुद ही थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं कि कोई इतना अधिक अपराधी है कि गुरु को ही त्याग कर देता है, उसकी क्या गति हो सकती है. I remember the case of I don't know the details of the matter, but one of the siblings of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he died in Bhaktisiddhanta's hands. तो श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर के एक शिष्य थे जो अपने गुरु महाराज के हाथों में ही उन्होंने शरीर छोड़ा. And when he was dying, he had this big tilak mat, the one from like Udupi area, that big tilak, not the traditional Gaudiya Vaishnava tilak. तो जब इस शिष्य ने शरीर छोड़ा अपने गुरु महाराज के ही हाथ में, तो उन्होंने त्रिपुंड तिलक लगाया हुआ था, जो गौड़िया वैष्णव तिलक है, नहीं था. And he told Bhaktisiddhanta when he was dying that in my past life I committed an offense against this family. He committed an offense against Bhaktisiddhanta's family. और उन्होंने अपना शरीर छोटे टाइम बताया कि मैंने पिछले जन्म में आपके प्रति अपराध किया था. So our system is very dicey. तो ये बहुत ही खतरनाक है. It's like a razor blade, it cuts this way and cuts this way. जैसे ब्लेड की धार है, उस पे कभी भी कट लग सकता है हमारे हाथ में, उसी तरह है. Even to hurt a devotee is not a devotee could stagnate your spiritual growth. Even to hurt, to offend a so-called ordinary devotee could stagnate our spiritual growth. तो हम किसी even to hurt a devotee will even to hurt any devotee will stagnate our. If we offend this so-called ordinary devotee, it will create a setback in our spiritual growth. हम किसी भी भक्त के प्रति कुछ भी अपराध करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक होगा. It is not that everybody who chants 64 rounds goes back to God. ऐसा नहीं है कि जो भी 64 माला का जप करता है वो भगवत धाम वापस चला जाता है, ऐसा नहीं है. Going back to God is an act of mercy. तो भगवत धाम जाने के लिए कृपा की आवश्यकता है. I mean, it's like you have some subjects, some causes. Take, say, for instance, some causes like statistics, say PhD level statistics. I remember when we were doing statistics at the PhD level, it was so difficult. 11 students in the class, and it was so difficult. So 10 of the students, they failed. तो जो ये स्टैटिस्टिक्स की जो जिससे पीएचडी कर रहे थे तो उस टाइम इतना कठिन होता है कि 10 विद्यार्थी फेल हो गए. So spiritual life is more difficult than statistics. तो जो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी होता है जो इतना कठिन है कि पास होना बहुत मुश्किल है, उससे कहीं अधिक कठिन है आध्यात्मिक जीवन. Devotional life is more difficult than PhD level statistics. तो भक्ति पीएचडी लेवल स्टैटिस्टिक्स से अधिक कठिन है. Devotional life is more difficult than PhD level calculus. तो पीएचडी लेवल का कैलकुलस होता है, उससे अधिक कठिन है भक्ति का जीवन. So there are a lot of intricacies in devotional life. तो आध्यात्मिक जीवन में कई बारीकियां हैं. That's why every morning we say, let's offer our humble obeisances to all the Vaishnavas. Vancha kalpatari bhyacha. We don't seem to understand the implications of that. We are afraid of offenses because it's going to stampede our progress. So whether we know the offense or not, we beg for forgiveness. Vancha kalpatari bhyacha kripa sundubhya evacha patitana pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Why are we saying this every morning? तो हम हर रोज क्यों वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं? क्योंकि चाहे हम
जाने, हमें जानकारी हो या ना जानकारी हो, चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में है, किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हम लोग हर रोज वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। So, instead of being in anxiety about offenses, Rupa Goswami has given us an alternative how to develop loving relationships among the devotees. और ये भी है कि कई बार हम घबराते रहते हैं, वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा, वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा, तो उसी मानसिकता में बहुत डरे हुए घबराए हुए रहते हैं। तो उससे अच्छा श्री रूप गोस्वामी पाद ने एक और विधि दी है जिसके माध्यम से सिखाया है कि कैसे भक्त लोग आपस में प्रेम और मैत्री के संबंध स्थापित कर सकते हैं। So, having given some insight about the implications of offenses, especially to highly elevated, devotees or gurus, is very intricate. Is very challenging. It is like it's a no-go area. तो वैष्णव के प्रति विशेष रूप से गुरु या जो उन्नत वैष्णव हैं उनके प्रति अपराध एक तरह से नो गो एरिया है, उस स्थान में कभी नहीं जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए पूरी तरह से। And ideally we should examine the acharya before we accept them as our spiritual master, because if we are not ready for the relationship, it is not a fashion. It's not a fashion and design stuff. तो इसीलिए दीक्षा लेने से पहले जिन आचार्य से हम दीक्षा ले रहे हैं उनके बारे में अच्छा जानना चाहिए, अपने अंदर पूरा विश्वास प्रकट होना चाहिए कि ये आध्यात्मिक धर्म में बहुत उन्नत वैष्णव हैं। कोई फैशन नहीं है, दिखाना नहीं है सबको कि देखो हमने भी दीक्षा ले ली। But if we make the examinations and we make a decision, is beyond what we call, is beyond for better or for worse. When people want to marry, they tie the knot. Traditionally they say, for better or for worse, no divorce. Okay. तो जैसे जब शादी के फेरे लगते हैं तो फिर दोनों के कपड़ों में गांठ मार दी जाती है और कहते हैं चाहे अच्छा समय आए बुरा समय आए साथ में ही रहेंगे, कोई डाइवोर्स तलाक नहीं होगा। उसी तरह जब एक बार निर्णय कर लिया कि एक आध्यात्मिक गुरु की शरण में जा रहे हैं तो बस उनसे गांठ बांध ली, अब उसके बाद कभी ये नहीं सोच सकते कि इनसे अलग होना है हमें। So the relationship between Guru and Krishna, and for me, since I started taking disciples, I've been very heavy in terms of the future of. I remember one young man here, he had approached me in New York. He said, "I want to be a disciple." I said, "That's no problem, but what do you hope to do with your life? You want to be a sannyasi, or in the future you hoping to marry?" He said, he never expected that I would ask him this. But he said, "I want to marry in the future." I said, "What is your educational qualification? What are your skills? If you marry, you have to take care of your family. What are your skills?" And he looked at me and he said, he dropped out from college. I said, "Okay, no problem. But if you want to marry, you have to go back to college and finish your degree, because in that way you are preparing for your devotional and your social future." So, someone comes. I remember also one young man, a Russian devotee, he approached me in Mayapur. I said, "You have to come to Mangalati every day and chant in the temple room your first 16 rounds." I said, "If you cannot do this to purify yourself, go look for another Swami, go look for another Guru." तो हमारे बता रहे हैं कि कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत हैवी होता हूँ। जब भक्त लोग मेरे पास आते हैं तो एक युवक है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में मेरे पास आया कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आपका क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आप संन्यास लेंगे या फिर विवाह करेंगे?
तो उसने बोला मैं विवाह करूँगा। तो फिर महाराज बोलते हैं, मैंने उससे पूछा कि ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है और आप में क्या स्किल्स हैं, क्योंकि आपको परिवार का पोषण करना है। तो उसने कहा मैं तो कॉलेज से ड्रॉप आउट हूँ। तो महाराज ने बोला पहले इसका मतलब जाओ कॉलेज में दोबारा जो पढ़ाई छोड़ी थी पढ़ाई करो, अपने को तैयार करो ताकि आध्यात्मिक जीवन भी जी सको और आपकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कर सको। इसी तरह एक और युवक ने मायापुर में महाराज को अप्रोच किया, रशियन डिवोटी थे, कि महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो महाराज ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए आपको हर रोज़ मंगल आरती में आना पड़ेगा और जो पहली 16 माला है वो यहीं पर मंदिर के अंदर ही बैठ के जप करना होगा। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जाओ किसी और गुरु को ढूंढो, उनके पास उनकी शरण लो। So it's a serious relationship, Guru-Krishna relationship. It's not a fun affair. It's not like, boyfriend and girlfriend, you hang out today and tomorrow you quit. It's not like that. तो गुरु और शिष्य का संबंध एक युवक युवती का प्रेम संबंध की तरह नहीं है कि आज इसके साथ हैं फिर कहीं और चले गए, नहीं, ये बहुत ही जिम्मेदारी का संबंध है। So we should feel prepared and committed to the cause of spiritual evolution, so that when we take up the commitment, we don't get shaken. तो इसलिए हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ आध्यात्मिक जीवन को लेना चाहिए और ऐसी कमिटमेंट्स लेनी चाहिए कि जो हम ले रहे हैं हम आगे उस पर बढ़ें, स्थिर रहें और बढ़ें। All right. Does it address your question? All right. I think we should. We can end up here. At least a benchmark has been made. The Mataji, someone has also voiced out some questions so that it doesn't look like a patriarchal organization only for men. So I think that we can, if there are no other comments or questions, we can adjourn this meeting. तो यदि और कोई प्रश्न नहीं है और वह है तो हम इस मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। माताओं को भी अवसर मिल गया कहीं, वरना बाद में माताएं सोचती है केवल पुरुषों की संस्था है, तो ऐसा आरोप भी नहीं होगा। तो माता ने भी प्रश्न पूछ लिया है, तो यदि आप लोग ठीक समझो तो भी हम इस मीटिंग को यहीं पर विराम दे सकते हैं। Any supporter? Any supporter for the adjournment of the meeting? तो आप में से कोई सपोर्ट करते हैं कि अब इस मीटिंग को, इस गोष्ठी को ही विराम दिया जाए? कोई सपोर्ट करते हैं? हरि He misunderstood, Maharaj. He misunderstood. The supporter misunderstood your question. Okay. His support was for adjourning the adjournment. What? His support was for adjourning the adjournment. Oh, really? Anyway, normally I don't really talk in classes for too long because of the culturation of standardized, presentation in a class, maybe 45 minutes. Prabhupada gives very short classes, but I'm not Prabhupada. If the devotees want me to say more, so then I have to hang on. So, thank you very much for participating in this Krishna consciousness. I'm always happy to come to hang out with the devotees in Faridabad. I think in the past years, I used to be regular here, but when I went back to the US, we stopped coming. So we hope that those of you who are serious with your spiritual life, we try to make some endeavor to register for the pilgrimages to Mayapur, to Vrindavan, to Puri, this. Don't think that it's a waste of money. It is part of our culture. All religious organizations, all religious traditions. The Christians, they go to Israel. Muslims, they go to Mecca, and we come to Vrindavan, Mayapur, Puri, so many holy places in India.
You are very lucky, you are very blessed. Srila Prabhupada ki jai. तो महाराज जी ने बोला बहुत धन्यवाद कि मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे आया, और पहले मुझे अच्छा लगता है फरीदाबाद आना, और पहले मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ, परंतु बीच में अमेरिका गया था, उसके बाद काफ़ी समय से नहीं आ पाया। तो आप लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट और बैठ जाइए सब लोग प्लीज़। आप लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेते हैं तो वृंदावन, मायापुर इत्यादि स्थान है, वहाँ जाना चाहिए। कोई पैसे का वेस्टेज नहीं है यहाँ पर जाना। तो हम महाराज जी का बहुत 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 धन्यवाद देंगे। तो महाराज वैसे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और महाराज जी ने बताया PhD हैं मैनेजमेंट साइंसेस में, और बहुत सारे 30 या 35 से अधिक पेपर्स जो हैं महाराज ने पब्लिश किए हैं। तो इज़ वेरी वेरी रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में महाराज को वो निमंत्रण देते हैं स्पेशल जो पेपर्स हैं वो सबमिट करने के लिए। तो महाराज ने अप्लाइड मैनेजमेंट और डिसीजन साइंसेज में USA से PhD किया हुआ है, और ख़ास तौर पे सोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं महाराज। तो सोनिक टेक्नोलॉजी में जो हरिनाम है वो भी आता है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो वैज्ञानिकों की संस्था में महाराज बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि यहाँ पे महाराज आए हैं। तो महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हिज होलिनेस भक्ति वसुदेव स्वामी महाराज जी की, श्रीला प्रभुपाद की, आने वाले जन्माष्टमी महामहोत्सव की संवेद गौर भक्त वृंद की जय। IYF युवा कैंप है ना, आज कैंप चल रहा है। IYF युवा कैंप की, श्रीला प्रभुपाद की जनिता गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। सब लोग प्लीज प्रसाद लेकर जाइएगा गीता भवन में। हरे कृष्णा। एक और प्लीज सॉरी 1 मिनट और। हरग्रेस दयामयी माता जी हैं, आप सब जानते हैं, बहुत ही सीनियर वैष्णवी हैं हमारे कम्युनिटी में। तो उनके पिताजी हैं, उनका कल रात को देहांत हुआ करीब 7 बजे के करीब। तो अभी 11:30 बजे उनका अंत्येष्टि संस्कार है। खेड़ी पुल पे है। तो पंचडविट प्रभु के फादर इन लॉ और दयामयी माता जी के पिताजी, तो उनका अंत्येष्टि संस्कार है। तो गृहस्थ भक्तों में प्लीज़ समय निकाल के वहाँ जाएं तो अच्छा होगा। वहाँ पे हम कीर्तन भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनको श्रील प्रभुपाद की कृपा जो है वो निरंतर मिलती रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। पद्म हरि प्रभु यदि यहाँ पर है तो मुझे मिल सकते हैं प्लीज। पद्म हरि प्रभु। हरे कृष्ण।